નમસ્તે મિત્રો, વેલકમ ટુ આઈની ટ્યુટોરિયલ્સ. ઘણા સમયથી એક વાત આવી રહી હતી કે કમ્પ્યુટરનો લેક્ચર મૂકવામાં આવે, તો મને પણ ઈચ્છા હતી કમ્પ્યુટરના લેક્ચર અપલોડ કરવાની, કારણ કે ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને ઘણી વખત કમ્પ્યુટર સબ્જેક્ટની અંદર ઘણી તકલીફ હોય છે અને પર્સનલી કમ્પ્યુટર સબ્જેક્ટ ક્યાંક ને ક્યાંક મારાથી વધારે રિલેટ કરે છે. એટલા માટે આજે કમ્પ્યુટરના લેક્ચરની આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. So, today we will start with the Standard 10 Computer, chapter number 1. That is just the introductory part of HTML. What do you mean by HTML? How we can use the HTML? What are the tags used in the HTML? What are the benefits of using HTML, etc., etc. But before we start the lecture, let's have some quick revision of concepts you have already learned in the Standard 9, right? So, सबसे पहले हम बात करते हैं what do you mean by network? What do you mean by network? So, network is the connection between the computers or any devices. How? Look, when we are talking about the network, it does not only mean the computers. So, network is all about the connection between the devices, right? So, it is not that when two or more computers are connected, that connection is called network, but when two or more devices like tablets, mobiles or any other devices is connected with each other using wired or wireless connectivity, it is called the computer network or network. तो कई बार हमें ये गलतफहमी होती है कि जब सिर्फ दो कंप्यूटर या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं उसी को हम नेटवर्क बोलेंगे. ऐसा नहीं होता है. जब एक से ज्यादा डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो मोबाइल हो, अगर वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं यूजिंग वायर्ड और वायरलेस कनेक्टिविटी, इट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क, राइट? तो कंप्यूटर नेटवर्क इज नथिंग बट व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर यूजिंग वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजी, इट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय www? That is World Wide Web. www, that is World Wide Web. 1990 के अंदर टीम्स बर्लिन-ली ने एक सिस्टम डेवलप किया था. वो सिस्टम था एक जगह से दूसरी जगह पे फाइल को शेयर करने के लिए. उसी सिस्टम को थोड़ा सा ज्यादा डेवलप करके टीम बर्लिन-ली ने 1990 के अंदर एक कंसेप्ट डेवलप किया जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब इज नथिंग बट द प्लेटफॉर्म ऑन विच योर वेबसाइट और योर वेब पेज इज रनिंग विद द ईच एंड एवरी सर्विसेज दैट इज नेसेसरी. नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है जो ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड 9 के अंदर पढ़ा हुआ है, दैट इज इंटरनेट. That is internet. What do you mean by internet? It is very simple, friends. When you are using a website or web page, it is through internet. But what do you mean by internet? इंटरनेट का मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि बहुत सारे नेटवर्क्स जब एक साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो जाते हैं तो उस चीज को हम बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क. क्या बोलेंगे हम? कंप्यूटर नेटवर्क. When one or more networks, or you can say the networks of network, बहुत सारे नेटवर्क्स एक जगह पे कनेक्ट हो रहे हैं और you can say network of networks is called internet. This is the simple definition of internet. Internet is nothing but the network of so many other networks.
मैंने आपको पहले ही बोला, जब एक से ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे हैं उसको हम नेटवर्क बोलेंगे। और वैसे बहुत सारे नेटवर्क्स जब एक जगह पे कनेक्ट हो रहे हैं तो उसे हम कंप्यूटर इंटरनेट बोलेंगे, या उसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स यानी इंटरनेट बोलेंगे। राइट? सो इंटरनेट इज अगेन नेटवर्क of so many networks, right? Okay, next is, what do you mean by web page? What do you mean by web page? Okay, it is very simple friends. When मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपको अगर मैं मैथ्स की कोई किताब ला के दूं तो आप सबसे पहले इंडेक्स चेक करेंगे, उसके बाद कुछ कंटेंट देखने के लिए आप उसके पन्नों को यानी कि उसके पेजेस को रिफर करेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। नाउ लिसन केयरफुली, व्हाट डू यू मीन बाय वेब पेज? वेब पेज इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। Web page is nothing but the collection of information which is uploaded on www. Which is uploaded on www, and that www will provide you the web page whenever you need it. जब आप सर्फिंग करते हो इंटरनेट के ऊपर, आप गूगल के ऊपर लिखोगे फॉर एग्जाम्पल जिगर जोबन पुत्रा, दैट्स मी, तो आपको मेरे रिलेटेड या दुनिया में जितने भी जिगर जोबन पुत्रा अवेलेबल है उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब ये जो इंफॉर्मेशन मिल रही है इट इज थ्रू वेब पेज, यानी इट इज ऑन द वेब पेज एंड दैट वेब पेज विल गिव यू द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर सर्च। सो वेब पेज इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। आप सिंपल बोल सकते हो द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड ऑन द वेब इन द फॉर्मेट ऑफ वेब पेज। Whenever you need it, just start computer, just connect internet and you will get so many information using so many web pages. Right? Next is simple, is called web browser. What do you mean by web browser? Web browser is a software which is stored in your local computer. First of all, www is on server. Internet is a collection of so many networks. Web page is again stored on www, and now web browser is the first thing that you are going to use for the internet that is stored in your computer. So web browser एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको कोई भी वेब पेज एक्सेस करने के लिए या उसे रीड करने के लिए नेसेसरी है। इफ यू डू नॉट हैव अ वेब ब्राउजर इन योर कंप्यूटर, you will never get the output of any of the web page stored on the www. Means to refer the information stored on the web page, you should have at least one web browser in your computer. Again, in a simple language, वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के अंदर आप यूज करते हो कोई भी वेब पेज को या इंटरनेट के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन को रिफर करने के लिए, देखने के लिए, इमेज को स्टोर करने के लिए या उसे देखने के लिए आप यूज करोगे वेब ब्राउजर। The information can be of any format. It can be of text, it can be of multimedia, it means audio, video, images, whatever it is. But web browser is a software which is used to refer, to view the web page on your computer. Right? So these are the simple concept before we are going to learn the HTML. What do you mean by www? What do you mean by internet? What do you mean by web page? And what do you mean by web browser? Right? So आगे बढ़ते हैं। अब आपने वेब पेज के बारे में देखा कि वेब पेज इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द www। तो अब हम थोड़ा सा वेब पेज के ऊपर फोकस करते हैं कि
वेब पेज को कैसे बनाया जाता है या वेब पेज कैसे आप यूज करो, राइट। सो बिफोर वी स्टार्ट, let me have some simple definition, or we can say some simple things that you should learn about, or you should remember about HTML. HTML is the markup language. HTML, that is hypertext markup language, is a markup language which is used to design a web page. Again I am repeating, HTML, that is hypertext markup language, is a markup language which is used to design a web page. HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो आप यूज करते हो कोई भी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, राइट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं HTML के बारे में। What is HTML and why we are using HTML and how we are using HTML. So HTML, that is hypertext markup language. So friends, आपके 10th स्टैंडर्ड के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर 1 जो है, इट इज नथिंग बट द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड व्हाट अबाउट HTML is, right? So what is the HTML? Hypertext markup language. Why it is markup language? Why it is markup language? Because the language is using the different tags to design a web page. Okay, again, why HTML is markup language? HTML क्यों एक मार्कअप लैंग्वेज है? HTML मार्कअप लैंग्वेज है बिकॉज कि वो अपने कोड के अंदर बहुत सारे टैग्स को यूज करता है, जो टैग्स आपके वेब पेज को डिजाइन करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, सो जब आप HTML को यूज करते हो, राइट, सो कुछ बेसिक चीजें हम HTML के बारे में थोड़ा सा दिमाग में डाल दें, राइट। HTML is not a case sensitive. Okay, so what do you mean by case sensitive? Case sensitive का मतलब होता है कि सपोज मैं अपना नाम यहां पे लिख रहा हूं, सॉरी, मैं अपना नाम अगर यहां पे लिख रहा हूं, राइट, सो यू कैन सी दैट फर्स्ट लेटर ऑफ माय नेम इज कैपिटल. व्हाई इट इज कैपिटल? नो नीड टू एक्सप्लेन, बिकॉज ये इंग्लिश रूल है, इंग्लिश का रूल है, और वो मैं आपको अभी बताना जरूरी नहीं समझता. लेकिन सपोज मैं कहीं पे मेरा नाम ऐसे लिखूं तो शायद वो अकॉर्डिंग टू रूल गलत हो सकता है, राइट, अकॉर्डिंग टू रूल, राइट. सो दिस जिगर एंड दैट कैपिटल J is different from each other. But in HTML, if you are writing some tags in a capital, for example, I am writing this HTML in a capital and then again in a small. Again, that writing in a proper case, it means first letter is capital and after that three other letters are in a small. So this all the things are same in my markup language, because HTML is not case sensitive. This HTML is correct as well, this HTML is also correct, and as well this HTML is also correct. So HTML is not at all case sensitive, so you can write HTML code in any cases. It means it can be in a capitalized, it can be in a proper case, or it can be in a smaller letter, right? So HTML is not case sensitive. ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा
in the format of fill in the blanks or in the format of MCQ, that is HTML is case sensitive. So you have to write no, HTML is not a case sensitive language, right? Okay, next. So HTML का अगर आप कहीं पे कोड देख रहे हो और अगर आपको HTML का कोड देखना है तो HTML का कोड हम दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट सेक्शन इज हेड and second section is body. First section is head and second section is body. It means that if I want to divide the HTML page, I can divide it in two sections, that is head section as well as body section. So what do you mean by head section? What is the head section, or what do you mean by head section? Head section is the particular section of the HTML page where you are going to provide the title as well as other information of your page. Head section या header section एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप पेज जो आप बनाने वाले हो उसका टाइटल और अदर इंफॉर्मेशन वहां पे आप लिखोगे. फॉर एग्जांपल हेडिंग है माय फर्स्ट वेब पेज, देन द अदर इंफॉर्मेशन विल बी दिस इज द फर्स्ट वेब पेज आई एम गोइंग टू डिजाइन यूजिंग HTML and I am student of Std-10, whatever it is, right? So फर्स्ट सेक्शन जो है हेड सेक्शन, उसके अंदर ऑलवेज ये बताया जाता है कि आपका पेज किस बारे में है, कौन सी इंफॉर्मेशन इस पेज के अंदर होगी, और एज वेल यू शुड हैव द टाइटल ऑफ द पेज इन द हेड सेक्शन. पेज का जो टाइटल है वो आपका कहां पे होगा? हेड सेक्शन के अंदर, राइट? ओके. सेकंड, बॉडी सेक्शन. सो व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी सेक्शन? इट इज वेरी सिंपल फ्रेंड्स. Body section is nothing but the main content of your web page. Main content? What do you mean by main content? Okay, suppose I am going to develop my biodata in the web page. मैं अपना बायोडाटा, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन HTML पेज के अंदर डालना चाहता हूं. Then how it will work? और how should I design the page, right? So head section के अंदर पहले मैं लिखूंगा my personal information, फिर मैं लिखूंगा I am so and so, और मैं यहाँ पे अपनी personal information डालने वाला हूँ. Then body section में मैं actual information डालूंगा, that age, name, qualification, then experience, then interest, hobbies, whatever it is. राइट. सो पूरी चीजें जो आप एक्चुअल जिसके लिए वेब पेज बना रहे हो वो सारी चीजें कहां पे आएंगी? बॉडी सेक्शन के अंदर आएगी. इट मींस बॉडी सेक्शन कैन हैव टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया मीन्स ऑडियो, video and images. So whenever you are going to design the body section, उस body section के अंदर, किसी भी पेज के body section के अंदर आपको उस पेज के बारे में मेन इंफॉर्मेशन, एक्चुअल कंटेंट आपको body section के अंदर मिलेगा. Right? Are you getting my point? Yes? Okay. So these are the section of HTML page. दो ही सेक्शन है फ्रेंड्स. सिर्फ दो सेक्शन के अंदर ये HTML कोडिंग आपका फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर खत्म हो जाता है. ये है हेड सेक्शन, जिसके अंदर आप लिखोगे कि सारी चीजें
कि सारी चीजें जो आप बॉडी सेक्शन के अंदर लिखने वाले हो उसकी टाइटल और वो किस बारे में है, और जो मेन कंटेंट आप लिखोगे वो ऑलवेज कहां पे लिखोगे, बॉडी सेक्शन के अंदर, राइट? यस, ओके. So now shall we start with the small example of HTML. So I think that's enough for HTML introduction, right? Okay. So I'm going to write the simple code of HTML on the whiteboard, right? And I will explain each and every tag and each and every thing that is designed by that HTML text, right? Okay. So focus here. Okay, so here we have a very small program that is regarding the HTML. We can say first example, very first example of HTML. Okay, so first thing is always the HTML. It means that this page is in the HTML लैंग्वेज. आपका फर्स्ट टैग जो HTML के वेब पेज के अंदर होगा वो ऑलवेज HTML होगा, जो आपको डिफाइन करेगा, आपको दिखाएगा कि आप जो ये एक्चुअल जो कोड लिख रहे हो इट इज इन द HTML लैंग्वेज, राइट? कोई भी अननोन बंदा जिसको नहीं पता कि ये कोड क्या है वो आपका सोर्स कोड ओपन करके देख सकता है